Law prohibits the arbitrary deprivation of rights under any circumstances. Article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, that is ICCPR, prohibits derogation from the right to life. Thus, even during emergency, none should be arbitrarily deprived of life. Second, ICCPR also prohibits torture and other forms of cruel, inhuman, and degrading treatment, even in times of emergency or when the security of the state is threatened. Thirdly, we can say that unfortunately it has been found that the Indian Army, Border Security Force, Special Task Force, and the Central Reserve Police, along with the principal government forces operating in J&K, have systematically violated these norms of international human rights law. In addition to the internationally recognized Human Rights Watch or Asia believes that both Government of India and the armed groups fighting against it, the ways in which Indian Army has violated human rights can be understood by several examples which we find in the newspaper. And in today's newspaper, we can find a glaring example of it. Since 1993, the Indian government has marched on a campaign to improve an international image tarnished by the apparent human rights record of its police and army. Some of the steps that Indian government has taken humanitarian services in Kashmir. However, certain measures which should have been taken were not taken. The vast majority of security personnel responsible for the abuses are never punished or are subjected to only mild disciplinary measures. Nothing has been done to curb the most egregious of abuses, summary executions and torture, or punish those responsible. India's government's counter-insurgency campaign has only escalated the... What does the UN say about the human rights? We've already, in the last 2 days, we've been seeing that people presenting papers have seen that. They're presenting papers on what happens in J&K or in other countries around India or in India to human rights. But what do we know about human rights? What do human rights mean? The UN. Human rights are international, moral and legal norms that aspire to protect all people everywhere from severe political, legal and social abuses. These rights exist in morality and in law at the national and international levels. They are addressed primarily to governments requiring compliance and enforcement. The main source of contemporary conception of human rights is the Universal Declaration of Human Rights, which lists over 24 different specific human rights. We may group these human rights into 6 or more families, such as the security rights, the liberty rights, the political rights, due process rights, the equality rights, welfare rights, and even the group rights. Human rights are not ordinary moral norms, applying mainly to persona, as Thomas Tuchel puts it. To engage human rights, conduct must in some sense be official. Human rights exist as moral and or legal norms. They are numerous rather than a few, as they address specific problems. Human rights are minimal standards. They are concerned with avoiding the worst rather than with achieving the best. Human rights are international norms covering all countries and all people living everywhere. In this sense, they are universal. They are high priority norms. However, they are not absolute. They have robust justifications that apply everywhere. Being rights, they also have addressees who are assigned duties and responsibilities. They are usually mandatory in the sense of imposing duties on their adversaries. Some people consider them to be और दूसरा ह्यूमन राइट पे सर मेरे क्वेश्चन भी ये 2 ही होंगे। फर्स्ट तो ये सिक्योरिटी है तो सर सिर्फ वीआईपीज के लिए है और पॉलिटिशियंस के लिए है, आम इंसान के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं है। ऐसा है जब हम देखते हैं नाके पे जाते हैं तो वहाँ पे और
सिक्योरिटी चैलेंज जैसे कि ये कहा इन्होंने बेग साहब ने कल कहा कि हमने सेंट्रल गवर्नमेंट का वेलकम करते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस वापस जा रही हैं। सर मुझे ये एक बार वहां पे पीसफुल रैली करके बता दें जिन एरिया से सोल्जर्स हटाए गए हैं, तो मैं मानूंगा कि ये पॉलिटिशियंस हैं। पॉलिटिशियंस क्या है, आम इंसान की तरह वहां पर घूम सकते हैं। सर ये था पहला। सर जैसे दूसरा मैं ये ऐसा ही एक मिसाल और है, पक्काडंगा में एक वीपी सिंह एसएचओ थे, शायद 6 महीने पहले की बात है ये, और एक बुजुर्ग उनकी गाड़ी के आगे ड्राइव कर रहे थे, पीछे से वीपी सिंह हॉर्न करते आए और मैं आई विटनेस हूँ उस केस का। सर उन्होंने क्या किया, उनकी गाड़ी को ओवरटेक किया जबरदस्ती और उनको गले से पकड़ के उतारा और पीटा एज ए क्रिमिनल की तरह, और उनको उठा के लेके गए और आपने उनको एक बॉडीगार्ड को बोला गाड़ी लेके आइए जी थाने। उनका क्या कसूर था कि वो थोड़े बुजुर्ग थे और वो गाड़ी थोड़ी आहिस्ता चला रहे थे, ठीक है सर। और फिर उनको थाने लेके जाया गया, उनको कस्टडी में पीटा गया और उनकी वहां पे डेथ हो गई। हाँ, और बाद में केस जो है एसएसपी साहब ने इंक्वायरी किया, निकला कि उनको हार्ट अटैक हो गया। सर जिस बूढ़े बंदे को 10 डंडे मारे जाएंगे उसको हार्ट अटैक आएगा, ठीक है सर। ऐसा सिक्योरिटी नहीं है, आम इंसान की सिक्योरिटी नहीं है। सर ह्यूमन राइट्स की बात कही जाए तो ऐसा है, मैं आपको ये बताऊं, वो चौथा डंडा नाम ऐसा है, ये लड़ाई जो है, ये सिस्टम में जो खराबियां पैदा हो गई हैं, वो उसके खिलाफ में लड़नी है। जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो उसमें ये भी आता है कि स्टेट की जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पुलिस है, बाकी कर्मचारी हैं, वो कैसे बिहेव करेंगे। आज से 5-6 साल पहले या 10 साल पहले पुलिस वाले या वर्दी वाले दुनिया में मिलते थे, लेकिन आज ये हाल है कि उनके खिलाफ भी केस दर्ज होते हैं, उनके खिलाफ भी कोर्ट इंक्वायरी कराती है, उनको भी जेलों में बंद किया जाता है, उनके खिलाफ भी मुकदमे लड़े जाते हैं। ये मिसबिहेवियर या मिसयूज ऑफ पावर्स है और ये लड़ाई डेमोक्रेटिकली लड़ी जाएगी। और ये बात ये नहीं है कि आर्बिट्रीनेस है इसमें कोई, क्या हमें मालूम है कि यहाँ नहीं, दिल्ली में भी होता है जो राजधानी है, ये भारत के हर शहर में होता है, लेकिन इसका मुकाबला जो है वो कानूनी तौर पर किया जाएगा। और क्या Co-chairperson Professor B.S. Singh and guest of honor Professor Riyaz Punjabi, and of course our dynamic principal Professor Indra S. Rathore. Thank you so much for your kind cooperation and so much for your help, Sir Punjabi. And of course I would like to thank you, Sir Punjabi, from the side of the participants, the young student participants who have got the award of these 5 days. Thank you so much. Should be proud of them. Yes. Now, I would like to invite all of you for the valedictory function of the seminar in the auditorium of Jammu University. Thank you so much and a good evening. They were very impressed, I tell you. ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ